أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم. I welcome you all to the online webinar on psychotrauma. First of all, I would like to briefly introduce our guest speaker for today, Professor Dr. Mowadat Rana. He's an MBBS, MCPS, FCPS, DCBT from Oxford University and MRC side. He's a gold medalist graduate of the pioneer batch of Army Medical College, Pindi. He is the chief editor of the Journal of Pakistan Psychiatric Society. He is the chairman of the Healing Triad Pakistan. Dr. Rana is the patron EMDR Pakistan and the founding secretary journal of EMDR Asia and honorary professor at Robert Gordon University, UK. He is an author of many books which have been published internationally and nationally. He was declared the best university teacher in the field of medicine by HEC Pakistan in 2007. He is the recipient of Sitara Imtiaz Star of Excellence from the government of Pakistan. His interests include psychotrauma and health professional education and psychosocial intervention in the field of mental health. Professor Rana remained as brigadier in Pakistan Armed Forces and advisor in psychiatry to the President of Pakistan. He is the founding commandant of Armed Forces Institute of Mental Health, and he was the Dean of Faculty of Psychiatry of CPSP Pakistan. Everybody knows very well the star of psychiatry in Pakistan. He needs no introduction. Many of us, including many of the psychiatrists in Pakistan working, they feel proud to be his student. I am one of them. और इनकी ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन बस उन्होंने बता दिया ये introduction. मेरा ख्याल है कि अब mic to Professor Rana and everybody would like to listen to him. हम चाहते हैं कि time ज़ाया न करें, उनकी बात सुनें. शुक्रिया. Over to you, sir. Thank you very much, Dr. Saiba and Professor Afridi for his very kind words and remarks. ये दूसरे वाली पहले जरा लगा लीजिएगा presentation. दो presentations मैंने भेजी. This PPS lecture that मैंने ये second presentation है. ये फिर बाद में लगाएंगे. जी सर. Okay, so I think further ado, let us start to talk about the subject of the day, and I'll spend about 40 odd minutes trying to highlight to you various aspects of psychological trauma, largely with two main objectives in mind. My first objective, as highlighted clearly, is to show to you that any psychiatrist who is worth his salt cannot think of practicing mental health without a clear understanding of the concept of psychological trauma. When I say mental health, I mean its clinical practice of mental health. You can do a lot of psychiatry and psychiatric practice, or as we call it, the commercial private practice of psychiatry without any understanding of psychological trauma. So I wouldn't bother you if you have plans that you are going to open up a clinic and see 100 patients every day and diagnose schizophrenia, bipolar disorder, and depression, sort these three out. And then for that kind of practice, I don't really think that you should bother yourself any further, and you can take an afternoon nap while I speak. But if you really want to do and become a mental health professional
there's no way that you can actually be a successful, sensible, mature mental health professional who can deliver to the people of Pakistan and to your clientele uh, sanity and mental health if you do not have an understanding of the concept of psychological trauma. So the first objective will be to show to you that you need to be raising the suspicion of psychological trauma in your clinical practice every now and then. So we'll try and show you when the suspicion should arise in your head. And once the suspicion has arisen, how to assess for psychological trauma. Many a times, you know, or even the patient can come out and say, I have had adversity in my life. But उसके बाद हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें. So this is what we are going to try and impart some degree of skill today by demonstrating to you how to go about the assessment of psychological trauma. So दो components हैं आज की गुफ्तगू के. The first is largely theoretical in nature. The second is primarily skill oriented, and I'll try and demonstrate to you how to assess a person with a history of psychological trauma. अब इसके लिए मैं ये चाह रहा था कि हम थोड़ा सा पहले एक प्री टेस्ट कर लें, और आई डोंट नो इन व्हाट फॉर्मेट ऑल ऑफ यू आर सिटिंग, क्या लेआउट है जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, बिकॉज व्हाट आई एक्सपेक्ट वुड बी दैट wherever we are, we do some joint work, that is work in pairs or in small groups, and I'll keep raising questions for you, and then you can respond to them. So the first pre-test that I'm going to ask you to do, ये slides मैं control कर रहा हूँ जी, या somebody from there is being controlled? सर मैं control कर रही हूँ. अच्छा, आप next slide कर दीजिए. जी सर. Okay, now the task at hand is कि मैं जहाँ जहाँ भी आप बैठे हैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि you can use the expertise of Hazrat Google Rahmatullah alayh and ask the Peer Sahab about this query. So it's not something that I want you to do through your memory or through some kind of innovation that comes to your mind. Please consult whatever text you want to and go on whichever site you want to. But groups may, in the next 5 minutes or so, if you can start to identify the functions of each of the following organs of the brain or parts of the brain that I've shown you here. Anterior cingulate cortex क्या करता है? Dorsal lateral prefrontal और orbitofrontal cortex क्या करता है? Corpus callosum क्या करता है? Corpus striatum क्या करता है? Hippocampus क्या करता है? और amygdala क्या करता है? और लेकिन मुझे सिर्फ आप एक फंक्शन आइडेंटिफाई करके बता दीजिएगा, and you can send it on text as well, but you can also, if I go back to you, you can just pick or identify one of those functions that is very important for a psychiatrist to know, or the mental health issues, people with mental health issues or psychiatric patients would be most concerned about that particular function of this part of the brain. So starting from now, I will give you exactly 5 minutes and bother you after 5 minutes to respond to me. Please start to look for functions of these organs. So I hope the task is clear to everybody. Yes, sir. Yes, sir. It's pretty clear.
Okay, I think most people have responded, and I can look at the group chat, and there are some fascinating answers from all of you. Fantastic. Executive functions, decision making, reward, fear and excitement, attention, motivation. Can you hear me all? Okay. Empathy, emotional regulation, hippocampus in memory. Okay, may I request you to stop, please? Let us stop here. Let us stop and do the next task. Please. Now, you've clearly seen that each of these parts of the brain are very important for a psychiatrist to be very clear about. But common causes are not those challenges that come and inflict change structural, histopathologically damage, pathological change in the brain structures. And the example of that is that when we say that there is a brain infarct, then we are talking of a structural pathology. When we say thromboembolism, we are talking of structural change. When we say that there is a tumor in the brain, there is a meningioma in the brain, then we are talking of structural changes in the layers around the brain. So these are structural changes. When we talk about, for example, Alzheimer's disease, we are talking of hyalinization of the neuron, which is demonstrable. If you do a histopathology on a biopsy of brain, you would find hyalinization and neurofibrillary tangles and amyloids deposits inside the neuron. These are structural pathologies. So I would expect you to just identify few or any of the common causes of those challenges that can cause structural pathology. So I'll give you 1 minute to do it. Please go ahead and start now.
what kind of challenges can cause structural changes in the brain? I'm not seeing any responses on the group chat. So if you can start to do that, I would know. So please try and type your responses on the Zoom group chat so that I know that there are some responses coming. This. Okay, so there's tumor, there's, I can see head trauma, there are tau proteins. Okay, so 1 minute over. Now, just see if the list that you have drawn is something like this. Next slide, please. Now, just compare the list that you had drawn with this list. And I'm sure your list you would find is not very different from some of these common causes of pathology in the identified parts of the brain that we had earlier shown to you. Those specific parts of the brain. Congenital malformations or agenesis. So all of those areas that that we were looking at earlier, the anterior cingulate cortex, the dorsolateral prefrontal and orbitofrontal cortex, corpus callosum, striatum, hippocampus, amygdala may have congenital malformations, and they may actually would never form even. So you could have a case of agenesis of corpus callosum. And you and I know that they would produce various kinds of psychological symptoms. You can also have damages done through infections, but also through inflammations that are autoimmune or external inflammatory phenomena. You could have this because of injuries, vascular insults, which are thromboembolic phenomena or hemorrhages, neoplasia, degeneration, seizures, and drugs. ये जो मैंने आपको लिस्ट दी है, ये particularly post graduate trainees के लिए बहुत useful है. In fact, you can have this generic list of pathologies of the brain. इसको अगर आप अपने दिमाग में एक दफा पक्का फिक्स कर लें एज ए पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी, और आपसे कोई भी कभी पूछे कि ऑर्गेनिक पैथोलॉजीज ब्रेन की क्या हो सकती है और उनकी इटियोलॉजीज किस तरह हो सकती है, so this is the way to classify it, and you will never go wrong because you will not miss any. So any patient who comes to you in the long case, in the short case, or on a talk station, and if somebody is asking you what could be the causes of organic pathologies in this patient, these are the causes. These are the standard causes of pathologies. मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, ये लिस्ट अगर सब लोगों को क्लियर होगी है, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि if you can go to the next slide, please. If these are the pathologies, and so structural pathologies that are taking place, what can happen to these organs, and what would happen to this person whose structures of the brain have been damaged, and the cause could be any of these pathologies that I've talked about. And so we're talking essentially structurally here. We are not talking what would happen, what would be the consequences, what would be the consequence. I'll give you a minute of what will happen to a person if these pathologies occurred in the areas that you have identified. 1 minute for you, and please start to also enter on the chat and be a little more specific as to what kind of changes would occur in people.
Okay. So you're 1 minute over. Now, let me show you if the list that you have drawn is somehow linked with any of these areas, because these are the consequences in a person that would happen. This is what is going to start to happen, or consequences of the structural pathology. Next, this particular. So either there'll be a loss of function, there'll be some psychopathology, which could be that of cognitive functions, or of mood changes, or of thought changes, or of depersonalization, derealization, anything, or it will change the behavior, overall behavior of the patient. There'll be some psychopathological change, it would occur. If any of these pathological changes occurred in any of the parts of the brain that we had identified. There could be connectivity issues, there could be neurodevelopmental pathologies, and there could be actually seizures because of it. Next, please. But let me now stop your test here. Stop your test here and identify for you. And when I would show you this particular commonest cause of structural pathology in brain, it might surprise many. But then let me tell you, there are several references, and from my own practice, and Professor Afridi and many of our senior friends are in the audience right now. They would tell you that there's a lot of evidence now to support that none of these causes that you identified and I had identified with you actually are so common as this particular factor that I'm going to highlight to you just now for causing structural pathology in brain. Structural pathology in brain. That's what we've been talking about. And this, ladies and gentlemen, is, next slide, please, cause of structural pathology in brain. Are you surprised? Because we've been constantly calling it psychological trauma. That means it's only in the mind. There are no structural components attached to it. That is this word, psychological trauma. That means there is no biological trauma. The term in itself is faulty. That's the first point that I want to highlight with you, that psychological trauma, ladies and gentlemen, today is a biological reality. It is not a psychological phenomena anymore. It produces psychological psychopathologies, all right, which are being discussed more and more. But I'll just show you the work of immense magnitude, which gradually is gaining more and more importance. And the gentleman that I'm going to refer is being repeatedly considered for a Nobel Prize for the last several years. He hasn't got it as yet, but I'm pretty sure that one day he's going to get this Nobel Prize, the man who identified psychological trauma. And this, ladies and gentlemen, was a person who did this study. Next, please. Next, this study, the Cdc Kaiser Ace Study, which was undertaken in 95, from 1995 to 97. There were more than 17,000 individuals in California who were included in this study over a period of 2 years. And there are 2 waves of these studies that has taken place since then. And I would just like you to spend 1 minute going through this pyramid that highlights to you a very, very interesting phenomenon. Just go through it for 1 minute. Now, let me just go through this with you just for clarification. The study was Adverse Childhood Experience Study. It's also called Cdc Kaiser Permanente
Ace study, because a lot of families that were studied were Spanish families. So for their convenience, the word permanente was used in this. Adverse childhood experiences study conducted in 95, 97. Several meta-analyses have taken place on adverse childhood experiences, consequences on the body. And would you be surprised if I told you that these adverse childhood experiences or psychological trauma in the early years of one's life do not just cause changes in the brain, they produce changes in the body, in the metabolism of the body, in the immune systems of the body. And in fact, if anybody has 10 adverse childhood experiences in life, this individual is likely to, as you can see at the right at the top, die 20 years on the average earlier than people who did not have any adverse childhood experience in life. So what we are talking about as psychological trauma, ladies and gentlemen, is not really a psychological trauma. It has serious physical consequences, not only for psychiatrists, but for physicians, for surgeons, for neurologists, because and surgeons, and you'd be surprised to know that it has relevance for oncologists, because these people, what do they die of? They die of cancers of the lung, cancers of the breast, cancers of colon, far more frequently than people who didn't have adverse childhood experiences. So what I'm trying to achieve with you here, ladies and gentlemen, right at the start, and I spent about 20 minutes doing so, is to establish with you that please start to understand psychological trauma. It's a doctor's realm. It's not a psychological theory. It's not a psychologist's realm, as much as a psychiatrist's realm, to understand the importance of psychological trauma, because it does not affect people only psychiatrically and psychologically. It affects them in the entire realm of their health. It is at the basis of metabolic syndromes. It is at the basis of various kinds of heart diseases. It's at the basis of various kinds of cancers, and predisposes people to autoimmune diseases and all sorts of structural pathologies. So when a good psychiatrist understands psychological trauma and starts to give it due importance and significance in his psychiatric practice, he's not only showing to the world that he's a better psychiatrist, but he's also showing to his colleagues who are physicians, surgeons, and oncologists that he's a better physician. And I've always maintained in my years spent with trainees that only a good doctor, an exceptionally good doctor, can make a good psychiatrist. If you're a bad doctor, I'm so sorry, it will be very, very difficult for you to become a good psychiatrist. So here is this bridge through which you can cross from psychiatry to medicine, psychiatry to surgery, psychiatry to oncology, and back. And this bridge is called psychological trauma. So whatever we understand today, ladies and gentlemen, is going to make you a better physician, a better surgeon, a better oncologist in terms of the diagnosis and picking up of diseases. You may not end up managing them, but the picking up of these diseases would start to be easier for you if you understood the entire word and realm of psychological trauma. Now, I'd like you to go back today and start to read Cdc Kaiser study. And there are several meta-analyses. Let me just show you one that I recently went through, and I love this paper. Next, please. Because it actually demonstrates very convincingly the enduring neurobiological effects of childhood abuse and neglect, which is one of the adverse childhood experiences. I'll talk about adverse childhood experiences in some detail subsequently, and we'll also demonstrate to you. So by now, ladies and gentlemen, are we not convinced that this is a very, very important issue for a doctor? What to talk of a psychiatrist? For a medical student to know. Medical student, undergraduate medical student needs to know about what psychological trauma is all about. And that is why the importance of the subject of behavioral sciences, that in his undergraduate years, he's exposed to the concept of social adversity and
psychological adversity and what happens in homes and houses that decides whether these individuals, these little children are going through adverse childhood experiences, how life is going to unfold for them. मैं आपको एक बड़ा interesting quote सुनाता हूँ. I don't know how many of you have read Bill Clinton's life histories. He's written an autobiography, Bill Clinton. You would love to read that book. It's a very powerful book written. पर उसने एक बड़ी खूबसूरत बात की है. उसने कहा कि जब मुझे मेरी बाईपास सर्जरी हुई तो मेरी बीवी ने बाईपास सर्जरी करने वाले सर्जन से ये पूछा कि I have looked after Bill so well in life. There's an inverted commas around what I'm just saying here because I'm not very sure about that statement. उन्होंने कहा कि ये तो इतना जबरदस्त आदमी है, खिलाड़ी आदमी है, भागता है, अपनी डाइट का ख्याल रखता है और बहुत लुक आफ्टर करता है, नॉन स्मोकर है. तो ये तो कभी कभी सिगार इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल से मुराद मेरी यही है कि वो सिगार पीते हैं. तो वो ये कैसे हो गया उनके साथ कि उनको बाईपास सर्जरी करनी पड़ी. तो he was somebody who had looked at the life of Bill Clinton in depth and detail and was conscious of the concept of psychological trauma. And he said that Bill Clinton's seeds of getting a bypass surgery were sown when his mother was divorced by Bill's father. ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है जो कि उसने दी और आज जब हम डिस्कशन कर रहे होंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये स्टेटमेंट में कितनी डेप्थ थी. ये वाकया मैंने आपको इसलिए सुनाया है that an intelligent cardiac surgeon and an intelligent cardiac physician also understands the importance and significance of psychological trauma in one's life. Now I'm going to switch to the other presentation. If I ask my colleague to please switch to the other presentation so that we can talk theoretically a little bit about what psychotrauma really is. So are we by now hopefully convinced about the significance and importance of knowing more about this term psychotrauma, which in itself is a bit of a misnomer? So very quickly, before I say anything at all, I would request you to write down, wherever you are, write down very quickly your definition of what you understand by the term psychological trauma. Very quickly. Your own concept. You don't have to look at my definition. I'm just trusting you that without reading what I have written about it, just think about it and discuss with the person sitting next to you as to what is your concept of psychological trauma. And then just compare your concept of psychological trauma with the definition that I've written here for. And let's go to the next slide. So you can compare your discussion with what I have written here as a definition that I will be pursuing with you during this period of time. In our discussion, what is psychology? Have a read of this. See, it's very important to understand that we are not talking of psychological trauma in terms of psychiatric pathology. We have to start to understand psychological trauma causing health consequences, health entirely, not in terms of just producing diseases, but changing physical and mental health of an individual, changing social and spiritual health of an individual. Health in the true WHO concept of the term. And I think that's very, very important to understand that whenever an individual or a community, individuals तो वो हैं जो कि आपके साथ patients के तौर पर आते हैं और community वो है जो इस वक्त मैं और आप COVID-19 में देख रहे हैं. COVID-19 is a classical example of a challenge to our life, in some ways to our properties as well, because if you're a businessman, your property is at stake now because of COVID-19. Thankfully, so far, at least,
not directly, COVID-19 is not challenging our integrity and honor so far. I'm not sure whether it is going to indirectly do that as well. But COVID-19 here is a classic example of a challenge to a community's life as well as much as an individual's life and property. So it will qualify the consequences of the impact of COVID-19 on our life is a classical example of psychological trauma. तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अपनी इस बात को अंडरस्टैंड कर लीजिए कि ये जो चैलेंज है ये बहुत तरह के हो सकते हैं. ये नेचुरल चैलेंजेस भी हो सकते हैं जैसे फ्लड्स और अर्थक्वेक्स होते हैं या सुनामीज होती हैं. They can also cause psychological trauma and health consequences. So when there is going to be an earthquake, if there ever is, खुदा न खास्ता ना हो, or a tsunami. So in the years after tsunami आएगी चली जाएगी, earthquake आएगा चली जाएगा. तो हमने इस काइजर की स्टडी से ये समझा है कि अगर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ है उस पर्टिकुलर फैक्टर से या उस चैलेंज से, तो फिर लॉन्ग टर्म में हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस स्ट्रक्चरल होंगे, डिजीजेस होंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस में. उस माशरे में सब्सिक्वेंटली कैंसर ज्यादा हो जाएगा, डायबिटीज ज्यादा हो जाएगी, इस्केमिक हार्ट डिजीज ज्यादा हो जाएगी. सिर्फ डिप्रेशन और पीटीएसडी नहीं होगा. Please understand this, and this is what psychological trauma and the realm of it is. It is not. अभी जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के फौरन बाद अगला लफ्ज पीटीएसडी हमारे दिमाग में आता है. तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके दिमाग से आज के बाद ये एसोसिएशन खत्म हो जाए साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और पीटीएसडी की, और आपको ये बात समझ आ जाए कि हम साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की जब बात करते हैं तो वी थिंक इन फार ब्रॉडर एंड बिगर टर्म्स देन जस्ट पीटीएसडी. वी आर टॉकिंग ऑफ हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस. And what are these challenges that can cause psychological trauma? They can be natural, but they can also be human-made. Can you think of few human-made challenges to human life, property, integrity, and honor? Just very quickly list some human-made causes. Can humans cause challenges to human life of their fellow beings, their property, integrity, and honor? Just think of few causes and write them down. And put them on the chat, please. I'm reading some fascinating answers. Excellent. So proud of all of you and your understanding of this term. Excellent. Beautiful answers that I'm reading here. Amazing. Very nice answers. Very nice answers. See, आपने देखा ये जो चैलेंजेस हैं ये किधर किधर से आ रहे हैं, ह्यूमंस किस तरह से चैलेंजेस ला रहे हैं. और इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आपने जो आइडेंटिफाई किए वो सोशल पैथोलॉजीज है, सोशल पैथोलॉजीज व्हिच कैन कॉज साइकोलॉजिकल ट्रॉमा. और अभी जब कोविड-19 बढ़ता जाएगा और इसका इम्पैक्ट बढ़ता जाएगा तो खाकम बदहन आपके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस नजर आने शुरू हो जाएंगे. आपको वायलेंस नजर आनी शुरू हो जाएगी, घरों में वायलेंस नजर आनी शुरू हो जाएगी, आपको सड़कों के ऊपर वायलेंस नजर आनी शुरू हो जाएगी, डॉक्टरों के साथ तो ऑलरेडी स्टार्ट होगी. What is this? Why do you see people behaving in such irrational fashion outside? अभी आपको समझ आ जाएगा. मैं आपको जो वार्न करना चाहता हूँ ये है कि ये दो जो अगली टर्म्स हैं ये ज़हन में रखिए, ट्रांसजेनरेशनल एंड रिपल. ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कि जो इम्पैक्ट है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का वो ट्रांसजेनरेशनल है. और वो जो पिरामिड मैंने आपको काइजर का दिखाया था ना, वो आपने देखा था कि वो डीप रूटेड था. वो उन लोगों की जिंदगी में चाइल्डहुड से स्टार्ट नहीं हो रहा था ट्रॉमा. उनकी जो इंट्रायूट्राइन लाइफ थी, जो उनकी लाइफ उस कल्चर में रहने से हुई थी,
वो भी अफेक्ट हो रही थी। तो अगर कैलिफोर्निया में रहने वाले वो स्पेनिश जिनके ऊपर सिविल वॉर के दौरान में इम्पैक्ट हुआ था 100 साल पहले, वो ज्यादा वल्नरेबल थे एज कंपेयर टू दोज वाइट्स हु हैड माइग्रेटेड फ्रॉम न्यूयॉर्क। अगर सिविल वॉर अमेरिका की आपको याद है तो वो नॉर्थ और साउथ के दरमियान हो रही थी, ईस्ट और वेस्ट के बारे में हो रही थी। तो फिर जो लोग वहां के लोकल थे या रेड इंडियंस थे जो ज्यादा अफेक्ट हुए थे for several generations, they were more vulnerable to develop psychological trauma. तो इसका जो इम्पैक्ट आता है और कोविड-19 का जो इम्पैक्ट आएगा, या जो 2005 अर्थक्वेक का इम्पैक्ट पाकिस्तान में था, या 2010-11 के फ्लड्स का पाकिस्तान पे इम्पैक्ट था, ये ट्रांसजेनरेशनल है। और अगर बॉम्बिंग्स होती रही हैं हमारे सर्टेन पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान के ऊपर नॉर्थ वेस्ट में, अगर ब्लास्ट होते रहे हैं पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में और मुख्तलिफ शहरों में, तो याद रखें कि उनका इम्पैक्ट अगली जनरेशंस को वल्नरेबल कर रहा है फॉर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा एंड द कॉन्सिक्वेंट हेल्थ पैथोलॉजीज। दिस इज द इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। और रिपल इफेक्ट क्या है? रिपल इफेक्ट ये है कि अगर एक जगह पर ब्लास्ट हुआ है तो वहां के लोग तो फिजिकली डैमेज हुए ना, सिर्फ कि वो उनको इंजरीज हो गई हैं, लेकिन उनको पीटीएसडी भी होगा, सिर्फ इंजरीज नहीं होंगी। 70% of these people are also going to get पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। लेकिन वो लोग जो उस जगह पे मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने टेलीविजन के ऊपर देखा है सिर्फ कि ये धमाका हुआ, उन्होंने सिर्फ अखबार में पढ़ा है कि ये धमाका हुआ और उन्होंने ये लाशों को देख लिया है, सिर्फ विजुअल्स देख लिए हैं, तो उन्हें भी ट्रॉमा होगा। और वो जो लोग जो कि किसी हॉस्पिटल में इंजर्ड लोगों को लेकर जा रहे थे, ड्राइवर्स, एम्बुलेंस के लोग, और वो नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स जिन्होंने रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज की इनके ऊपर, वो भी ट्रॉमेटाइज हो जाएंगे। इसका मतलब ये रिपल है कि यहाँ पत्थर गिरा तो यहाँ एक बड़ा सा दायरा बना, लेकिन ये दायरा बढ़ता गया, माशरे के अंदर आगे की तरफ जाता गया। एवरीबडी इज गेटिंग इफेक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर फिनोमेना। तो इवेंट एक जगह होता है, ब्लास्ट एक जगह होता है, रेप एक बंदे के साथ, एक औरत के साथ होता है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो उन तमाम लोगों के जो उसके इर्द गिर्द हैं उस पर होना शुरू हो जाएगा। दिस इज द रिपल इफेक्ट अबाउट साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। तो ये चीजें याद रखने की हैं, ये टर्म्स याद रखने की हैं पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग को, कि जब वो हिस्ट्री ले रहा है किसी की, तो वो ये जब पूछता है कि आप माइग्रेट हुए थे पाकिस्तान में या आप लोकल हैं, आपके इलाके में फसादात कब कब हुए हैं। जिस जमाने में 1972-73 के लिसानी फसादात कराची में हुए थे, तो आप कहाँ थे? जब बॉम्बिंग हो रही थी 2002 में, 2003-04 में मुख्तलिफ इलाकों में, नॉर्थ वेस्ट के और वजीरिस्तान के, उस जमाने में आपकी फैमिली कहाँ थी? तो वो जब वो ये सवाल पूछ रहा है तो वो एक्चुअली शो कर रहा है कि उसको ट्रांसजेनरेशनल इम्पैक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की समझ है। तो जब वो सवाल पूछ रहा है हिस्ट्री में कि आपने वायलेंस कभी टेलीविजन के ऊपर देखी है होते हुए, कभी आपके इर्द गिर्द कहीं ब्लास्ट हुआ और आप वहां मौजूद थे, तो उसको रिपल इफेक्ट का कॉन्सेप्ट पता है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के बारे में। सो व्हेन यू आर अपीयरिंग इन एग्जाम्स एंड यू आर गिविंग वाइवास और यू आर रिस्पॉन्डिंग टू एन एग्जामिनर, तो ये ज़हन में रखिए कि वहां डेमोन्स्ट्रेट कीजिएगा अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रांसजेनरेशनल इम्पैक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बाय आस्किंग दीज क्वेश्चंस इन द हिस्ट्री टेकिंग। तो लॉन्ग केस जब आपका हो रहा होगा और आप ये पूछ रहे होंगे ट्रांसजेनरेशनल और रिपल इफेक्ट्स, तो वो जो एग्जामिनर है उसको समझ आ रही होगी कि ये कितना डीप थिंकिंग साइकाइट्रिस्ट है, कि उसको ये कॉन्सेप्ट्स पता है रिपल इफेक्ट के और ट्रांसजेनरेशनल इम्पैक्ट के साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। So let us go to the next slide. Now, I would just like you to very quickly go through this slide and understand why do these factors that we've talked about actually cause psychological trauma? Why are they like this? तो इसकी एक basis तो ये है that human beings do not or have not evolved themselves enough right now कि जो कुछ उनकी तरफ आता जाए वो उसको डील करना शुरू कर दे। So peace time है, ह्यूमन बीइंग की जो फिजियोलॉजी है, इट इज अ पीस टाइम फिजियोलॉजी। ये वॉर फिजियोलॉजी नहीं है, ये एडवर्सिटी की फिजियोलॉजी नहीं है जिससे मैं और आप बने हुए। इसलिए जिससे कोई ट्रॉमा होता है तो ह्यूमन बीइंग्स गेट इनटू ए पोस्चर ऑफ 4। आप जरा सा देखिए कि खुदा न खास्ता
खुदा न खास्ता इस वक्त बाहर कोई बहुत जोर से धमाका होता है, तो आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स ये होगा, we will go on 4. Why we would go on 4? Because basically we will regress at that point in time. We will not stay human anymore. We will become 4-legged. ऐसे हो जाएंगे हम. And we will go into a fetal position, an earlier state of development पे हम चले जाएंगे. इतना बड़ा, क्योंकि हमारी जो फिजियोलॉजी है वो उस धमाके के लिए नहीं बनी हुई, वो इस सुकून इत्मीनान के लिए बनी हुई है, पीस के लिए बनी हुई है. कि एसी चल रहा है और आप बैठे हुए एक प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं मजे से बैठे, और साथ साथ चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं. इसके लिए बना है इंसान. 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो, अच्छी सी फिल्म चल रही हो और मैं आराम आराम से बैठा हुआ कावा पी रहा हूं. इसके लिए इंसान बना. वो बाकी तमाम चीजें जो उसको ट्रॉमेटाइजिंग लगती हैं, इसलिए उसने पूरा जहन्नुम का जो तस्वर बनाया हुआ है, वो सारे का सारा तस्वर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को समझ के कि वहां पर एक्यूटनेस है, सडननेस है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, और वो चीजें आपके साथ हो रही वो कभी जिंदगी में नहीं हुई जो वहां पर हो. उसे वो पूरा तस्वर ही साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके सामने रखे हुए, क्योंकि बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स लैक द न्यूरोबायोलॉजिकल apparatus to deal with traumatic events in their life. यहाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए कि अगर कल को आपको ये सवाल आए एग्जाम में कि हाउ वुड यू मैनेज और हाउ वुड यू प्लान फॉर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा दैट हिट्स अ पर्टिकुलर प्रोविंस और अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ अगर होगी तो आप वो प्लान बनाते हुए समझ जाएंगे कि इंसान अकेला किसी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को नहीं डील कर सकता, उसके पास एपरेटस ही नहीं है. तो लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, सोसाइटी को इकट्ठा करना पड़ेगा, खानदान को इकट्ठा करना पड़ेगा. चाहे एक इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो तो वो भी उसी वक्त होगा जब पूरा खानदान मिलकर उस बंदे की सपोर्ट करनी शुरू कर देगा, पूरा मोहल्ला मिलकर सपोर्ट करना शुरू कर देगा, पूरा शहर इकट्ठा हो जाएगा. अभी कोविड-19 में आपने डॉक्टर अफरीदी साहब के लेक्चर सुने होंगे और हमारे बहुत सारे और दोस्तों ने बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स दिए हैं. तो एक ही बात को मेंटल हेल्थ की बार बार करते हैं कि इकट्ठे हो जाएं, मिलके रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि कोविड-19 को अकेले रिस्पॉन्ड किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे पास फिजियोलॉजिकली ऐसा न्यूरोबायोलॉजिकल अपरेटस ही नहीं है कि जिसके साथ आप किसी एडवर्सिटी को डील कर सकें. सो इस फैक्ट से एक्चुअली यू कैन राइट अ होल प्लान इफ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट दैट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट. एंड देयर आर अदर एस्पेक्ट्स जो कि मैंने नीचे इटैलिक्स में लिखे हैं जो कि कैरेक्टराइज करते हैं व्हाई a certain thing would be traumatic for human beings and cause psychological trauma. ये भी आप पढ़ लीजिए. Next slide please. Next slide please. अच्छा, ये जो स्लाइड है ये थ्योरेटिकल है. मैं ये स्लाइड आपके पास दे दूंगा, इसको मैं अभी बहुत ज्यादा ड्वेल नहीं करना चाहता, लेकिन मैं यहाँ पर ये जो मटेरियल है आपके लिए थ्योरेटिकल है, बहुत मेहनत के साथ इकट्ठा किया है आपके लिए ताकि आपको बहुत ज्यादा खारी ना काटनी पड़े, और एक स्लाइड के ऊपर आपको वो सारे रिस्क फैक्टर्स मिल जाएं. और ये रिस्क फैक्टर्स मैंने इसलिए इकट्ठे किए हैं कि एक्चुअली जब आप हिस्ट्री लेते हैं साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की तो आपको इन सारे फैक्टर्स की हिस्ट्री लेनी होती है. सो ये मैं मटेरियल छोड़ूंगा आपके लिए ऑफ डेवलपिंग अ हिस्ट्री प्लान, कि जब आपके पास एक मरीज एस्टैब्लिश हो जाए कि इसको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, इसकी हिस्ट्री है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की, चाहे वो ह्यूमन मेड हो चाहे वो नेचुरल, तो फिर उसके अंदर क्या डिस्कशन करनी है, उसके साथ क्या हिस्ट्री लेनी है. तो जैसे साइकियाट्रिक हिस्ट्री लेने के लिए आपको अलहदा से टाइम चाहिए होता है एक पेशेंट का, जैसे मेडिकल हिस्ट्री लेने के लिए एक पूरा टाइम चाहिए होता है अलहदा से, तो ये याद रखिए कि इस इंडिविजुअल को अब आपको अलहदा से एवेलुएट करना पड़ेगा एज अ पेशेंट ऑफ साइकोट्रॉमा. अलहदा से उसकी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, एंड यू वुड रिक्वायर टू स्पेंड sometimes 45 minutes, 1 hour, 2 hours, and I have spent up to 3 to 4 hours with patients of psychological trauma trying to dig out their history. It's not easy. लेकिन उस हिस्ट्री में पूछना क्या है, कुछ मैं आज आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, लेकिन ये जो मैं लिस्ट आपको अभी देने लगा हूं, ये वो लिस्ट है जिसके बारे में आपने बातचीत करी. सो प्री ट्रॉमा कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल को वल्नरेबल करते हैं टू डेवलप साइकोलॉजिकल ट्रॉमा. हैव अ लिस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू. प्री ट्रॉमा.
तो कोविड-19 से वो लोग ज्यादा मुतासिर होंगे जिनकी पास हिस्ट्री पर्सनल लेवल की सेक्सुअल अब्यूज की है, वो ज्यादा अफेक्ट होंगे कोविड-19 से। वो लोग जो कि एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से एक्सपोज हुए हैं, उनकी इम्यून रिस्पांस कम होगी और वो ज्यादा वल्नरेबल हैं टू डेवलप कोविड-19 इन्फेक्शन, और उनकी प्रोग्नोसिस भी उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी उन लोगों की है जो एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस नहीं रखते अपनी जिंदगी, और वो हैड एक्सपीरियंसेस लेस देन 3। उसका क्रिटिकल नंबर 3 है एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस का। 10 फैक्टर्स हैं, अभी मैं दिखा दूंगा आपको, लेकिन उनमें से अगर 3 से ज्यादा हो तो फिर वो कट ऑफ से ऊपर चले जाते हैं, और उसमें आपकी चांसेस और रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है ऑफ डेवलपिंग पैथोलॉजीज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर किसी की सब्सटेंस अब्यूज की हिस्ट्री है, वो ज्यादा वल्नरेबल है, सोशियो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है, ज्यादा वल्नरेबल है, लाइफ के और बहुत सारे स्ट्रेसेस चल रहे हैं, नौकरी नहीं है, नौकरी से फारिग कर दिया गया, घर के अंदर हंगामा हुआ है, तलाक हो रही है, रिलेशनशिप इश्यूज बने हुए हैं, किराए का मकान छिनने वाला है, मूव कर दिया गया है एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर उसको, तो ये जो जिसके लाइफ के स्ट्रेस है, घर में और बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है, 3-4 लोग बीमार हो गए हैं। जब कंकरेंट लाइफ स्ट्रेसेस बढ़ जाएंगे तो ये बंदा ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा। फीमेल्स and older people and children are more vulnerable to develop psychological trauma as compared to others. ये प्री ट्रॉमा है, तो ये हिस्ट्री लेनी है जनाब आपने, जब साइको ट्रॉमा की हिस्ट्री होगी। ये मैंने लिस्ट आपके लिए बना दी ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू वुड नीड टू आस्क। नेक्स्ट प्लीज, एक क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट, नाउ what would you ask about the traumatic event? This is peri-trauma. This is the history of the event, the rape, the earthquake, the blast, the bombing, the arson, whatever event you are discussing, which is the trauma event, उसके बारे में क्या क्या बातें पूछनी है, ये सारी लिस्ट है यहाँ। These are factors peri-trauma. ये आपको नोट करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि ये स्लाइड आपके पास होगी, और जब आप ये वाली चीजें सारी असेस कर लेंगे तो इसमें थोड़े थोड़े पॉइंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल पेरी ट्रॉमा में याद रखिएगा कि जो मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं उनका इम्पैक्ट ज्यादा होता है, दे कॉज मोर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा एज कंपेयर टू नेचुरल डिजास्टर्स। तो अगर किसी की जिंदगी में सैलाब आया है तो उसका इम्पैक्ट निस्बतन कम होगा एज कंपेयर टू अगर वहां पर उसके घर डाका पड़ा है, उसके घर में रेप हो गया किसी का या उसका, तो वो जो, या उसके घर में कत्ल हो गया कोई उसकी आंखों के सामने, इसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा बिकॉज दिस इज ह्यूमन मेड एज कंपेयर टू अर्थक्वेक व्हिच इज नेचुरल। इस तरह के ये फैक्टर्स हैं जो कि उसकी मेमोरी कितनी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो वो उसको याद ही कुछ नहीं है उस इवेंट के बारे में जो हुआ था, तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी पैथोलॉजी ज्यादा होंगी, साइकोपैथोलॉजी। लुक एट दीज पोस्ट ट्रॉमा फैक्टर्स, पोस्ट ट्रॉमा फैक्टर्स को भी आप देख लीजिए। मैं इनके बारे में बहुत ज्यादा ड्वेल नहीं कर रहा इस बिकॉज ऑफ द फैक्ट ऑफ द लिमिटेड टाइम दैट वी आर लेफ्ट विद, और लास्ट ऑफ ऑल you can actually measure all of these phenomena biologically. There are cortisol changes. In fact, post trauma आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि जब कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हो तो हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स ऊपर जाने चाहिए, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना है दैट पीपल हु डेवलप पैथोलॉजीज फॉलोइंग साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, देयर कॉर्टिसोल लेवल्स गो डाउन. In fact, if you do a dexamethasone suppression test on some of these people, you would find that dexamethasone suppression test both at 8 o'clock and 4 o'clock would show lower levels of cortisol as compared to what you were expecting. So वो लोग जिनकी cortisol levels high हो जाते हैं उनके अंदर PTSD के chances कम होते हैं, जिनके response में cortisol levels नीचे जाएं उनके अंदर PTSD के chances ज़्यादा होते हैं. You can measure some of these phenomena. You can measure the size of prefrontal cortex, hippocampus and amygdala. ये अब आपने देखा, ये वो वाले organs हैं जो कि स्टार्ट में मैंने आपसे बात की थी और आपने उस पर रिस्पॉन्ड किया था, आपने देखा. तो ये जो ट्रॉमा के लोग हैं उनके ऊपर ये वाले चेंजेस आते हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल एंड न्यूरोजेनिक चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द ब्रेन, एंड देयर आर सेवरल स्टडीज टू शो what I'm just trying to show you here.
as risk factors. So those people जो कि ये मैंने आइडेंटिफाई किया है, ये वो लोग हैं जिनको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट. So I hope you find this slide useful in your history taking and assessment of people with psychological trauma. ये मैं आपके पास छोड़ दूंगा इस स्लाइड को, और आप इसको डिटेल से स्टडी कीजिएगा जब भी आपके पास टाइम. नेक्स्ट प्लीज. Now, let me show you that you can actually undertake lot of studies during COVID-19. ये मैंने आपके लिए, आपने जो एज पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज अपने पेपर्स लिखने हैं ना, आप जो आपने अपनी डिसर्टेशंस लिखनी है, ये उसके टॉपिक्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे. बिकॉज बहुत सारी स्टडीज ऐसी हैं जो कि ये शो करती हैं दैट बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा. सो कोविड-19 से जो मुतासिर लोग हैं, जो फैमिलीज जो मुतासिर हैं, जिनके एक में एक मर गया, 4 बीमार हो गए, 2 अस्पताल चले गए, उनकी फैमिलीज के ऊपर आप ये स्टडीज कर सकते हैं. ये मैंने इसलिए रखी है आपके सामने टू असिस्ट यू विद टॉपिक्स दैट यू कैन चूज इन द नेक्स्ट 1 year फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएट डिसर्टेशंस एंड पोस्ट ग्रेजुएट पेपर्स जो कि रिक्वायरमेंट है फॉर एफसीपीएस की. एंड एज ए डिपार्टमेंट आप ये स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं पेशावर में, रावलपिंडी में, लाहौर में, जहां भी आप हैं, रहीम यार खान में, मुल्तान में, बावलपुर, सक्खर, कोयटा, wherever you are, हैदराबाद, जहां भी हैं, आप ये स्टडीज अपने डिपार्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं. And they are publishable studies. You will find immediate publication if you do these studies, and you will find a lot of support from Higher Education Commission for funding for these studies, because they're looking for now. मैं आपको ये बताता चलूं कि तकरीबन 1 अरब के funds available होंगे in the next 1 year for research studies that can take place in Pakistan by Ministry of Health, local ministries, as well as organizations like Higher Education Commission. So अगर आप ये start करें और funding के लिए apply करें, ये वाले areas हैं जिनको आप study कर सकते हैं. जो मैंने आपको पहले list बताई है, वो risk factors की studies कर सकते हैं, और इनकी studies आप कर सकते हैं जो मैंने आपके सामने. Okay, so now let us very quickly move on to some of the consequences of psychological trauma. What would you find happening to people? मैं इन पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा. I just very quickly would ask you to scan through these slides. Scan through. That the consequences of psychological trauma clinically would be behavioral, cognitive, and emotional. इस तरह के सिम्टम्स, इस तरह के बिहेवियर पैटर्न्स आपको नजर आएंगे पेशेंट्स में. तो जब आप इस तरह की मिक्सचर देखनी शुरू करें लोगों में, तो याद रखिए कि यू आर डीलिंग विद साइकोलॉजिकल ट्रॉमा. और प्लीज नेक्स्ट ये क्लिक कीजिएगा. यू वुड प्लीज पीछे जाइएगा, ये जो जस्ट गो बैक. हाँ, ये जो मैंने बॉटम पे चीजें लिखी हैं, ये वो वाले साइंस हैं जो कि मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में और हिस्ट्री में आप इलिसिट कर सकते हैं इन पीपल विद साइकोलॉजिकल ट्रॉमा. मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में prejudices, paranoias, delusions of jealousy, overvalued ideas, greedy behavior, pre-morbid personality assessment में हम इन चीजों को देखते हैं, but now you can see them as consequences. Next. What would be the psychological state of people in COVID-19? अगर आप ये देखना चाहते हैं कि psychological changes क्या आई हैं COVID-19 के consequence में, psychotrauma, so this is what is going to happen. और मेरा ख्याल है कि कोई भी बंदा जो आजकल बिहेवियर पैटर्न स्टडी कर रहा है लोगों के, मीडिया के ऊपर या 1-on-1 इंटरेक्शंस के अंदर, उसको ये सारे साइकोलॉजिकल रिएक्शंस नजर आ रहे हैं. So if somebody asks you to design a response sheet or assessment कि आप COVID-19 के लोगों को जाके assess करें psychologically, तो here is a list for you that you can use. What would you look for in there? You'd look for anxiety, you'd look for lack of control, blame, rejection, guilt, concentration and memory lapses. Next, please. अब मैं थोड़ा सा आपको ये दिखा दूं जो कि आपको पता ही है कि clinical outcomes क्या होते हैं. Very quickly, I'm sure just a revision for you. Next, please. The famous good old PTSD. और इसके जो
क्लासिकल फीचर्स हैं, ये आपके सामने लिखे हुए हैं. When do you diagnose PTSD? Exposure to a psychological trauma. 4 weeks के बाद persistent re-experiencing flashbacks, avoidance and hyperarousal. After 4 weeks. Before 4 weeks, ये वाली चीजें consider होती हैं as acute stress reactions which are now being called normal responses to trauma. So पर अगर ये beyond 4 weeks persist कर जाए, but please also keep in mind that sometimes the patient for the first time starts to experiencing these symptoms 6 months, even 1 year, and sometimes several years later after the exposure of that trauma. तो ये नहीं है कि ये 4 हफ्ते के बाद ही शुरू हो जाएगा PTSD, 6 महीने बाद भी शुरू हो सकता है for the first time, 1 साल के बाद भी हो सकता है, several years के बाद भी हो सकता है for the first time. और लिंक कहाँ होगा? वो वाला ट्रॉमा जो कि several years पहले हुआ. Next. Next, please. These are other psychiatric disorders that you would start to see in the consequence of COVID-19, but as a consequence of any psychological trauma as well. Next, please. But I would like you to also keep in mind, and when you are researching, तो ये एक बहुत बड़ा फिनोमेना है जो बहुत कम स्टडीड है और इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है सारी दुनिया में. It's called the post-traumatic growth. That actually people are showing that when you pass through adversity in life, you can actually become a better and a more resilient person. Now, this is mental health. इसलिए मैंने आपसे कहा था कि psychiatry नहीं है psychological trauma. It's mental health. So a lot of positive changes in the society take place. People become far resilient following the trauma. And Pakistan is now generally known in the world as one of the most resilient nations. One thing that you can be very proud of, कि हमने पिछले 2 decades से चूंकि deal किया है psychological trauma के साथ, so we become a very resilient nation. I don't know whether people would be able to say that about COVID-19's response, Pakistan's response, also being resilient, but this is what is. Post-traumatic growth का लफ्ज़ याद रखिएगा, अपने ज़हन में रखिएगा. Research करते हुए, there are some very nice standardized psychometric tools, and one of those psychometric tools has been already evaluated in Pakistan and standardized at Armed Forces Institute of Mental Health, whereas an original study that was done by a colleague of mine alongside me as a co-author, where we established post-traumatic growth in Pakistani troops. So there's a psychometric tool that you can use to measure post-traumatic growth, the same way that you can measure post-traumatic stress disorder through various kinds of psychometric tools. Next, please. Next, please. ये वो रिपल इफेक्ट है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था. ये जरूर ज़हन में रखिए. ये बहुत डिटेल से मैंने कर लिया था, लेकिन यहाँ डायग्राम इसलिए ताकि आपके पास ये ज़हन में रहे. पीछे चल जाइएगा जरा प्लीज. इसको रजिस्टर करिए, रिपल इफेक्ट. इसका मकसद ये है that you would always keep in mind that the impact of psychological trauma is not where it occurs. It occurs all around the people suffering because of that one individual who is traumatized. And one community that has been exposed, emanating it to other parts of the community as well. And people who are sitting at a far distance away from Waziristan would be affected. Distant people who have nothing to do with the 16th December 2014 disaster of Army Public School. उनके बच्चे वहाँ नहीं पढ़ते थे. But just by hearing about those children, they can be traumatized. अब जनाब हम लास्ट पार्ट पर आ गए, तो स्किल डेमोन्स्ट्रेशन की जो बात हो रही थी, तो इसमें मैं आपकी थोड़ी सी चीजें जो मैं डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूँगा, वो पहली ये है कि as trainees and as consultants or as practitioners of mental health, when would you start to think of psychological trauma? So here is this exhaustive list that I have drawn for you. Just go through it. ये exhaustive list है of situations जहाँ पर आपको सोचना चाहिए कि psychological trauma मैंने exclude करना है. So ये आप list पढ़िए.
And please ask any questions if you have at this stage about these phenomena. You can use the raise hand option, or you can ask the question in the chat box as well. As well. Most welcome. So very quickly, if I summarize everything that is said here, is that these people in your ward or in your practice or in OPDs, जो आप कई दफा देख रहे हैं कि आपके पास रिपीटेडली आ रहे हैं और वो ठीक नहीं हो रहे, आपने उनको एंटी डिप्रेशन दे के देख लिया है, आपने उनको कॉम्बिनेशन एंटी डिप्रेशंस के दे के देख लिए हैं, आपने उनको एंटी डिप्रेशन और एंटी साइकोटिक इकट्ठे दे के देख लिए, और आपने उनको दुनिया की सारी दवाइयां दे के देख ली और वो ठीक नहीं हो रहा है, ये वो लोग हैं जहां पर आपको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे लोग हैं कि जिनके जो मल्टी सिस्टम प्रॉब्लम्स हैं, उनको कुछ तो थॉट डिसऑर्डर है, लेकिन साथ साथ उनको एंजाइटी भी है, लेकिन साथ साथ उनको ऑब्सेसिव सिम्टम्स भी हैं, लेकिन साथ साथ उनको उनका मूड भी डिप्रेस्ड है, और थोड़े थोड़े उनके कॉग्निटिव फंक्शंस भी अजीबोगरीब हो रहे हैं, और वो तो डिसोसिएट भी कर रहे हैं, लेकिन वो तो कुछ साइंस उनके अंदर डीरियलाइजेशन के और डीपर्सनलाइजेशन के भी हो रहे हैं। Here is a person that you should exclude psychological trauma. Neat and clean mood changes, neat and clean thought changes, neat and clean cognitive deteriorations, neat and clean depersonalization, derealization only, neat and clean obsessive compulsive phenomena demonstration, unlikely that it will be psychological trauma. Mixture, amalgamatum of various kinds of psychopathologies in an individual. Individuals you find with very low frustration tolerance. जब आपको कोई आदमी आपके क्लिनिक में आके ये कहे कि डॉक्टर साहब जरा ध्यान रखिए कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, here is a high risk individual. साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के मरीज के बारे में मैं चाहता हूँ कि आप एक इमेज अपने जहन में बनाएं। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के लोग उस तरह होते हैं जैसे सेकंड डिग्री बर्न्स वाले लोग होते हैं। अगर आप किसी सेकंड डिग्री बर्न वाले बंदे को देखिए, उसका हाथ यहाँ जला हो, तो आप देखेंगे कि वो इस तरह करके चल रहा होता है, इस तरह अपने हाथ को बचाता हुआ। अगर आप उसके ऊपर ऑइंटमेंट लगाने की कोशिश करें, वो कहते हैं मैं नहीं लगानी, मैं तकलीफ हो। He is showing hypersensitivity on the skin. बिल्कुल इसी तरह से साइकोलॉजिकली ट्रॉमेटाइज्ड इंडिविजुअल होता है, वो भी एक स्कैब से कवर करके अपनी इंजरीज को चल रहा होता है। वो स्कैब किस तरह का होता है? आमतौर पर दे हैव दिस हाफ स्माइल ऑन देयर फेस, दे आर नॉट ट्रूली स्माइलिंग, दे आर नॉट लाफिंग, दे आर आल्सो नॉट सीरियस। दिस हाफ स्माइल इज दैट स्कैब ऑन देयर वुंड। और जब आप उनसे पूछते हैं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, there's trouble here. जब अब कोई ये कह रहा हो मुझे कोई भी मसला नहीं है, and then the eyes are getting wet, psychological trauma. जब कोई आपकी तरफ देखते देखते बात करते करते अचानक रुक जाए और दूसरी तरफ देखना शुरू कर दे बात करते हुए, तो आप ज़हन में रखिए कि आखिरी बात क्या कर रहा था वो, जिसके फौरन बाद उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया। ये वो वाले क्लिनिकल साइंस हैं जो कि आप ओपीडी में बैठे हुए जब अप्रिशिएट करें तो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के बारे में सोचें। जब आप देखें कि एक इंडिविजुअल आपके साथ बात करते हुए ये करें, हंसते हुए क्यों करो, that means there have been moments of agitation and embarrassment in his or her life, and he has been heavily criticized. और ये जब अभी हम आगे चल के बात करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि जब वो छोटा था तो उसको कितना क्रिटिसाइज किया गया वो हंसने के ऊपर।
उसकी कहीं बदसूरती के ऊपर, तो वो इस तरह के जेस्चर्स करेगा, वो अपने जिस्म के किसी हिस्से को बचा रहा होगा, बॉडी की पोस्चर्स ऐसे ऐसे बनाएगा जिसमें कि थोड़ा सा बेंट फॉरवर्ड पोस्चर होगा उसका. So these are these little telltale signs that would show you that here is this person who is suffering from psychological trauma. So people with borderline personality disorders, deliberate self-harm people with psychosexual problems. जहाँ आप देखेंगे एक बंदा बात कर रहा है लेकिन वो थोड़ी सी लय भी आई हुई है उसकी बात में, और वो इधर यूं करके भी बैठ रहा है और यूं करके भी gestures कर रहा है. If I'm not offending anybody in the audience by doing these gestures, consider. अगर आप देखेंगे किसी पेशेंट ने एक यहाँ भी रिंग पहना हुआ है, यहाँ भी रिंग पहना हुआ है और दो यहाँ भी पहने हुए हैं, और एक अजीबोगरीब किस्म का बैंड भी यहाँ पहना हुआ है, और ऑड सा हेयर स्टाइल बनाया हुआ है, और आधे बाल रंगे हुए हैं और आधे नहीं रंगे हुए, तो पाकिस्तान में ये काफी टेलटेल साइन होगा. But it may not be so much true for other parts of the world. But here in Pakistan, if you find people dressed up in the most odd fashion, if you find this young girl coming from a small village dressed up in a trouser that you do not expect, जहाँ उसकी अम्मी ने बुर्का पहना हुआ है, तो सोचिएगा कि इसको कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा तो नहीं हुआ जिसके बाद इसने इस तरह से ड्रेस अप करना शुरू कर दिया. So these might be politically incorrect statements that I'm making right now, but these are to highlight to you these telltale signs in your clinical practice where you should consider psychological trauma. So ये suspicion sites states हैं जहाँ पर. अगली चीज जो important है कि अच्छा अब आपको पता चल गया कि psychological trauma है इस patient है तो अच्छा जनाब फिर अब इसको एग्जामिन कैसे करना है. तो अब इस स्लाइड पर आप देखिए नंबर 2 के ऊपर मैंने क्या लिखा है. आप जब याद करें 3rd ईयर 4th ईयर फाइनल में आपको एब्डोमेन का एग्जामिनेशन पढ़ाया गया था, तो वहां क्या कहा गया था? ये कहा गया था कि एब्डोमेन में अगर राइट साइड पर राइट इलाइक फोसा में अपेंडिक्स इन्फ्लेम्ड हो तो आपने राइट इन फोसा में बिल्कुल अपना हाथ सबसे पहले नहीं लगाना. अगर मरीज ने ये कहा है कि मुझे राइट क्वाड्रेंट में लोअर एब्डोमेन में तकलीफ हो रही है, तो आपने अपना हाथ वहां नहीं ले जाके रख देना. आपको याद होगा कि आपके सर्जरी के प्रोफेसर ने जब क्लिनिकल मेथड्स कराए थे तो आपको ये कहा था कि अगर पेन राइट इलियाक फोसा में हो बेटा, तो आपने पैल्पेशन लेफ्ट इलियाक फोसा से फारदेस्ट डिस्टेंस के ऊपर स्टार्ट करनी है, और उसके बाद आपने राइट लेफ्ट इलाइक फोसा से शुरू करके पहले लेफ्ट सब कॉन्ड्रिल रीजन में चले जाना है, फिर उसके बाद एपिगैस्ट्रियम में चले जाना है, फिर आपने सब एपिगैस्ट्रियम में चले जाना है, फिर आपने लिवर के नीचे अप्रोच करना है, और लास्ट ऑफ ऑल you will go to the right iliac fossa and you would familiarize the individual well before that. You have to prepare exactly in the same way when you are discussing psychological trauma. अब मैं आपको दिखाता हूं कि वो सीक्वेंस क्या है जिसमें कि आप करना चाहते हैं इसको evaluate. So I can do this with any of you who wants to opt for it, and I will do the demonstration. But if you want, I can do it just on myself and keep asking the question and responding as well. Whatever is logistically convenient, मुझे बता दीजिएगा कि मैं आपको demonstrate करूं कि अब ये जो examination of abdomen है या examination of psychological trauma in a patient है, वो कैसे करना. One of you wants to be that patient, or I can do both the roles. Whatever is logistically feasible for you. Sir, I can become a patient and you can go on asking the questions. Okay. चलिए अपना नाम बताइएगा मुझे. Dr. Hira. डॉक्टर हिरा. ओके. सो हम अब ये सपोज कर रहे हैं कि आपकी जनरल गुफ्तगू इससे पहले हो चुकी हुई है, रेपो बिल्डिंग हो चुकी हुई है, और हमने हाई सस्पिशन से ये अंदाजा लगा लिया है कि आपको कोई एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हुआ है. सो अब ये जो मैं डेमोन्स्ट्रेशन आपको दूंगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, ये इस बारे में है
कि एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को किस तरह से अप्रोच किया जाता है, किस तरह से आप क्या सवालात करते हैं जिससे कि जो मरीज है वो अनकंफर्टेबल ना हो, परेशान ना हो और आपकी बात भी चल पड़े। सो इसमें सबसे पहली बात आप देखिएगा कि जो मैं शुरू करूंगा आपसे, देखिए हीरा, मैं आपसे अभी कुछ सवाल ऐसे करूंगा जिनका ताल्लुक आपकी जिंदगी के उन हिस्सों से है जो कि आज की बीमारी से मुतालिक नहीं है। ये जो मैं मौजू भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो एरियाज भी डिस्कस करूंगा, वो आपकी मौजूदा जिंदगी के हवाले से नहीं, उसका ताल्लुक आपके बचपन से, आपके स्कूल के जमाने से ज्यादा है। ठीक है, तो आप तैयार हैं इसके लिए? जी सर, तो ये जाके स्क्रीन खत्म हो जाएगी तो ये वाला बंद हो जाएगा, फिर बात कर देते हैं। जी सर, इजाजत है। पता नहीं चला, स्टॉप शेयर को कर दो, स्टॉप शेयर कर दो, ये करता ये मेरी और हीरा की आवाज सब लोगों को आ रही है? जी जी, ओके ओके जी। तो हीरा, आपको इस पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर हम इस जमाने के बारे में बात, आपको याद है कुछ चीजें उस जमाने की, अपने बचपन की और स्कूल के जमाने की? थोड़ी बहुत याद है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात। अच्छा, बाजुकात ये होता है कि लोग स्कूल में जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो वहाँ हर तरह के बच्चे होते हैं ना, तो कुछ ऐसे भी बच्चे देखे गए हैं स्कूलों में जो कि उन बच्चों को जो थोड़े से कद में छोटे हों या कमजोर हों या उनका रंग कम हो, तो उनको उनके साथ बड़ी वो ज्यादती करते हैं, उनके साथ बड़ी बदतमीजी करते हैं और उनको बहुत सताते हैं, तंग करते हैं। तो इस तरह का कोई वाकया आपने होते हुए देखा हो स्कूल के जमाने में? जी, बहुत सारे इस तरह के वाकयात देखे हैं। मेरे साथ खुद भी ऐसे हुआ था डॉक्टर साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके साथ भी हुआ ऐसे? जी। ठीक है। Now that we have identified bullying, see, but remember, how did I do it? I did not say, have you been bullied? ये नोट करने की बात है यहाँ पे। I could have said, have you been bullied? And the response in a bullied person often would be no. So मैंने उस फिनोमेना को स्कूल की प्रेवलेंस में आइडेंटिफाई किया है और चांस दिया है. So most people with psychological trauma would talk exactly the way Hira has said. Beautifully done. कि जी होता क्या था, मतलब ये कि मेरे साथ हुआ हो. और अगर नहीं कहा, मिसाल के तौर पर हिरा ने ये कहा कि हाँ जी हमारे स्कूल में होता था, तो फिर मैं पॉइंटेडली पूछ सकता हूँ कि कभी हिरा ऐसा तो नहीं हुआ कि इस तरह की किसी शख्स से आपकी भी मुलाकात हुई? जी हिरा, कि जिन्होंने आपको बुली किया हो स्कूल में? जी सर। अब आपने देखा कि फिर मैंने ये नहीं कहा कि आपको बुली किया गया है, अब भी मैंने इंडिविजुअल कोई और रखा है अपने गुफ्तगू में, बात में किसी और के बारे में कर रहा हूं, इनके बारे में बात नहीं कर रहा. आपको याद है कोई ऐसा शख्स जिसने इस तरह का अंदाज इख्तियार किया हुआ आपके साथ? सो द एम्फेसिस इज टू, वही एब्डोमेन वाला ज़हन में रखिए कि आपने इंडिविजुअल को कॉर्नर नहीं होने देना. जैसे ही वो कॉर्नर होगा वो एकदम रेजिस्ट करना शुरू कर देगा और अगली बातचीत नहीं होगी. सो वी ऑफन स्टार्ट, एंड इट इज अ गुड way of starting psychological trauma history to go through school times and with bullying, because उसके अंदर blame किसी और के ऊपर होता है, इंडिविजुअल के ऊपर कोई blame होता नहीं है और वो अक्सर दूसरों को blame कर भी रहा होता है उसके लिए. अभी आपको क्लियर हो जाएगी ये बात जो मैं अगली आपसे करने वाला. अच्छा, ये मुझे बताइए कि कभी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि ये जैसे पिछले सालों में बहुत पाकिस्तान में धमाके वगैरह होते रहे और सैलाब भी आते रहे और अर्थक्वेक भी आते रहे, बहुत सारे डिजास्टर्स होते रहे जो हमने देखे, कुछ ऐसे जो कि इंसानों ने कॉज किए, कुछ ऐसे जो कि नेचर ने कॉज किए. तो इनमें से किसी को आपको करीब से देखने का मौका मिला? जी, एक मेडिकल स्कूल में जी. बिल्कुल कॉलेज के सामने एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था. अच्छा. तो वो आवाज भी सुनी थी, शीशे भी टूटते हुए देखे थे और एज अ मेडिकल स्टूडेंट फिर उस हॉस्पिटल में भी गए थे. अच्छा, यानी कि जब हॉस्पिटल में लाए गए वहां के जख्मी, तो
तो उस वक्त एज ए मेडिकल स्टूडेंट आप वहां मौजूद थी जी। So now you see we have called about the exposure, but हमने यहीं पर ही उनसे पूछ लेना है कि जब वो वाकया आपने देखा तो उसके आपके ऊपर क्या असरात मुरतब हुए, उस वाकये के फौरन बाद या चंद हफ्तों और महीनों के बाद. So now we are basically asking about. अब ये खुद ही कहना शुरू कर देंगे अगर PTSD के सिम्टम्स, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर मैं इनसे स्पेसिफिकली पूछ लूंगा. बात का ऐसे देखने में आया है हिरा कि लोग जब इस तरह का कोई धमाका सुन लेते हैं या उन्होंने फिर जख्मियों को भी करीब से देखा, उस धमाके से लाए गए, तो उनमें ये देखने में मिलता है कि वो वाकया उनकी जिंदगी से और उनकी याददाश्त से हटता नहीं है. और उनकी याददाश्त में कहीं जब वो क्लास में बैठे हुए हैं, आम चल फिर रहे हैं, कहीं सफर कर रहे हैं, या कोई खामोशी है तो ये वाकयात बार बार उनके दिमाग में आते. सुना आपने मैंने कहा? जी एग्जैक्टली सर. जिस जगह पे वो वाकया हुआ था, जहाँ एग्जैक्टली हम लोग खड़े थे, तो उस जगह से जाने से होता है कि दोबारा वैसे ही शीशे टूटेंगे. एंड आई स्टिल रिमेम्बर हमारा एक एग्जाम था, टेस्ट था, हम सब ने उसकी किताब पकड़ी हुई थी एंड वी ऑल रैन फ्रॉम द बिल्डिंग. तो अब वो एग्जाम हो, वो डिपार्टमेंट, वो जगह, तो फिर वी स्टिल एक्सपेक्ट कि शायद दोबारा वैसा ब्लास्ट होने वाला. तो कभी बात का ऐसा होता है कि जैसे ये आपने भी बताया ना कि वो आपको फीलिंग्स हो रही थी, तो फिर वो ख्वाबों में भी वो कैफियत पैदा होनी शुरू हो जाती है, यानी कि ना सिर्फ जागते हुए बार बार उसका ख्याल आए, बल्कि ख्वाब आने शुरू हो जाए इंसान को उसी के हवाले से. ख्वाब तो सर जी ख्वाब तो नहीं है, ख्वाब कभी आए. अच्छा, ये भी बाज़ का देखने में मिलता है कि जब ये मामला शुरू हो जाए ना एक दफा, तो कई महीनों सालों तक ऐसा होता रहता है कि इंसान जो है वो थोड़ा सा ज्यादा जल्दी से घबराने वाला बन जाता है. यानी उसको लोग कहने लगते हैं यार तुम बड़े घबरीले हो गए हो. यानी घबरीले से मरा दिया कि जैसे अचानक कहीं कुछ टूटने की आवाज आई है, कुछ गिरने की आवाज आई है, तो वो एक स्टार्टल रिस्पॉन्स दे, ऐसे जंप कर जाए अपनी सीट के ऊपर से जब कोई चीज हो. तो बाज़ लोगों में ये वाली कैफियत भी देखने में मिलती है. सर ऐसे होता है, अगर एकदम से कोई आ जाए या कोई कांच का गिलास टूट जाए या कोई जोर से दरवाजा मारे, तो एकदम से पैल्पिटेशन स्टार्ट हो जाना, पसीने शुरू हो जाना, इस तरह की. तो ये देखा आपने कि हमने उसको प्रोब कर लिया, सिम्टम्स को प्रोब कर लिया, और इसी तरह से मैं उसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा था कि हम आगे बढ़ सकें इसमें, बट यू ट्राई एंड सी द प्रिंसिपल्स दैट वी आर फॉलोइंग. एक तो हमने पॉइंट नहीं कर रहे हैं इंडिविजुअल की तरफ, पैरेलल्स ड्रॉ कर रहे हैं और उसको चांस दे रहे हैं कि वो उसमें से पिक कर ले अपने सिम्टम्स को. उसको पॉइंटेडली कह नहीं रहे कि आपका सिम्टम है, आप ऐसा कह रहे. तो इस तरह नहीं कहना आपको कि आपको बुरे बुरे ख्वाब तो नहीं आते, आप बहुत ज्यादा टेंस तो नहीं हो गए उसके बाद. तो ये पॉइंटिंग क्वेश्चंस नहीं करने, सजेशंस नहीं देने उसको उन सिम्टम्स के बारे में, बल्कि पैरेलल्स ड्रॉ करके उससे आप बहुत आसानी से इन चीजों के बारे में पूछ सकते हैं. अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि ये जो चीज हम अभी आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं, जिसके बारे में ख्याल पैदा हुआ कि शायद वो भी आपकी जो मौजूदा कैफियत है इसमें कुछ रोल प्ले कर रही हो, तो उसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात इंसान ने अपनी पहले की जिंदगी में या शुरू में या कुछ अर्सा पहले ऐसी वीडियोस देख ली होती हैं, ऐसी कोई फिल्म देख ली होती है जो बहुत डरावनी हो, जिससे कि उसको देखने से बहुत ज्यादा उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई हो, उसका मुंह सूख गया हो और उसको एकदम उसे बंद करके और हटना पड़ा हो उस सारी सूरत हाल से. तो ऐसा भी डरावनी फिल्में और वो हॉरर मूवीज, और बाज़ औक़ात वो पिछले दिनों में आपने देखा था कि इस तरह की बड़ी हौलनाक किस्म की डरावनी और वहशतनाक वीडियोस भी घूम रही थी सोशल मीडिया के ऊपर. सर जो बिल्कुल सर्कुलेट हो रही होती हैं न्यूज़ चैनल्स पे, जो दिखा रहे होते हैं, या इवन सोशल मीडिया पे, वायलेंस, फिजिकल या बॉम्ब ब्लास्ट के बाद के जो स्ट्रीट साइड क्राइम हो रहा है उसके वीडियोस. तो अच्छा, ये सारा कुछ आपको कभी हुआ मौका देखने का? जी सर.
Now, once this is done, then again I will go back to that same PTSD set of questions and ask if she's testing positive for those questions. अब देखिए, मैंने जो अभी तक 3 एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं, उनका एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन आई एम प्रिपेयरिंग ग्राउंड्स, यानी कि ये मैं अभी तक लेफ्ट इलियाक फोसा और लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन पर ही घूम रहा हूँ, लेकिन अब मैं आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गया हूँ टुवर्ड्स द राइट इलियाक फोसा, और उसमें मैंने सबसे पहले ये नहीं कहना कि जनाब आपको बचपन में आपके साथ कोई जिनसी ज्यादती तो नहीं की गई, मैं ये नहीं कहूँ। आप इस पर गौर कीजिएगा कि मैं इसको शुरू कैसे करूंगा इस बात को। हिरा, ये जो मैं आपसे अभी बात करने लगा, इसका ताल्लुक आपके जिंदगी के कुछ तल्ख वाकयात से है। हर शख्स की जिंदगी में, बशमूल मेरे, बाकी लोगों के, हम सब की जिंदगियों में कुछ ना कुछ तलखियां, कुछ ना कुछ ऐसे वाकयात हुए होते हैं जिनका बड़ा गहरा असर हमारी शख्सियत पर पड़ता है, और वो बहुत डरावना हिस्सा होता है हमारी जिंदगी का, बड़ा ऐसा हिस्सा होता है जिसने हमें जख्मी किया होता है किसी न किसी हवाले से। तो मैं आपसे जरा ये पूछना चाहता था कि आपके अपने घर में जो आपकी वालिद वालदा थे, उनके जो ताल्लुकात थे, जो उनके रवैये एक दूसरे के साथ रहते थे, उसमें इस तरह की कोई कैफियत तो नहीं पैदा हुई कि जो बड़ी दर्दनाक हो और आपको आज भी याद रहती? पेरेंट्स का तो ऐसा कोई वो नहीं था, लेकिन कुछ बचपन में ऐसी चीजें थी जो डिस्टर्बिंग थी। लेकिन मैं जो खासतौर पे पूछना चाह रहा था ना आपसे, वो ये था कि कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आपकी बात नहीं कर रहा मैं, कि घर में आपकी वालदा के साथ किसी ने हाथ उठाया हो, उनके साथ बदतमीजी की हो, उनको किसी ने तंग करने की कोशिश की हो, या वालिद? I'm saying this just for the purpose of the class. जी, बिल्कुल, we understand that you're doing a role play. वालिदा के साथ तो नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत याद है, जब मैं बहुत छोटी सी थी तो हमारे घर में एक मुलाजिम था, उसने मुझे now I realized कि he touched me inappropriately. अच्छा, मैं ये जो आपने भी बात की बहुत ज़रूरी है, और इसके बारे में हम थोड़ी सी और तफसील चाहेंगे। मुझे मालूम है कि इस तरह की बातों के बारे में गुफ्तगू करना आसान नहीं होता। ये जो आपके घर में बाकी जो लोग थे, वो महफूज थे? आपकी बहन, आपके भाई, उनके ऊपर तो कभी कोई जुल्म ज्यादती की कैफियत नहीं हुई? मैं खुद उस वक्त बहुत छोटी थी, तो और एज ए फैमिली वी नेवर टॉक्ड अबाउट इट। मुझे नहीं पता सब इसके बारे में आपको कोई अंदाजा नहीं है बाकी लोगों के बारे में? अच्छा, घर में आपके कोई ऐसे लोग थे जिनको कोई जहनी बीमारी हो, खुदा न खास्ता डिप्रेशन या शदीद जहनी मर्ज हो? नहीं, कोई नहीं। बाज घरों में ऐसा होता है ना कि उनके रिश्तेदारों में या अपने घर के अंदर ही, या किसी का आना जाना ऐसे आदमी का कि जो बहुत ज्यादा नशेई हो या शराबी हो, इस तरह की कभी कोई कैफियत आपको याद है बचपन में कि आपके घर में हुई हो? हाँ, मेरे एक अंकल थे, वो अल्कोहल यूज करते थे। और वो कभी इस तरह से घर में आके तोड़-फोड़ वगैरह तो नहीं कभी करते थे? नहीं, उनका आना बंद था हमारे घर। ठीक है, तो सही। ये जो खुदा न खास्ता खानदान में किसी को जेल वेल का सिलसिला या हवालात का सिलसिला तो कभी नहीं हुआ बचपन में, आपको याद हो? नहीं। अच्छा, देखिए, अभी what I want to demonstrate to you is कि she has raised the issue of sexual abuse so directly and abruptly with me, and I have parked it. I am not probing it. I have parked it, and I am still going around. तो ये जरा ज़हन में रखने की बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि you have got the sign. Don't jump to it. Don't jump to it. Park it. Keep it easy for her and let her talk about traumas of other people.
causes for that people. अभी she is actually identified for me कि इनको sexually किसने abuse किया, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, मैंने उसको पार कर दिया. इन्होंने अपने उस अल्कोहलिक अंकल का जिक्र कर दिया है जो कभी कभी इनके घर आया करता था, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, मैंने उसको छोड़ ही दिया है यहाँ पर, मैंने उसको भी प्रूव नहीं किया. सो स्टार्ट हमने कहाँ से किया है, हमने, आप इस स्लाइड की तरफ भी देखते रहिए, हाउस होल्ड चैलेंजेस से स्टार्ट किया है, और इसके अंदर हमें एक सेक्सुअल अब्यूज की चीज मिल गई, लेकिन हमने उसको प्रूव नहीं की. और आप देखिए कि मैं हाउस होल्ड चैलेंजेस से निकल गया. क्या क्या चीजें मैंने हाउस होल्ड चैलेंजेस में की? मैंने पेरेंटल वायलेंस, पेरेंटल रिलेशनशिप, कोई वालदा के साथ जुल्म ज्यादती, बाप के साथ जुल्म ज्यादती, बहन भाइयों के साथ जुल्म ज्यादती, उसका जिक्र करी. हाउस होल्ड के लेवल पर मैं बात करता चला गया हूँ. मैंने सब्सटेंस अब्यूज और ड्रग अब्यूज और अल्कोहलिज्म और मेंटल इलनेस खास तौर पर, और अगर मैंने नहीं पूछा तो मैं भी पूछना चाहूंगा, सुसाइड के बारे में जरूर पूछें घर में, किसी ने खुदा न खास्ता खुदकशी तो नहीं की. सो डिप्रेशन, मेंटल इलनेस, सुसाइड, very important that you keep these in mind and talk about them with the person. और जेल की बात बहुत जरूरी है. ये सारा कुछ हाउस होल्ड पे. और अब हम जरा सा अभी भी हम देखें, अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो निग्लेक्ट का होगा, और हम अब्यूज का टॉपिक नहीं यूज कर, निग्लेक्ट का करें. अच्छा, ये मैं जरा सा पूछना चाह रहा था, आपके लिए मुश्किल होगा इसके बारे में बात करना. आपको क्या लगता था कि आपके घर में जो आपकी हैसियत थी बाकी बहन भाइयों की निस्बत, वो जो अहमियत दी जाती थी, जितनी मोहब्बत आपके साथ इजहार किया जाता था, जितना आपका ख्याल किया जाता था, वो वैसा ही था जैसे बाकी बहन भाइयों के साथ? नहीं डॉक्टर साहब, आपको तो पता है, भाई को ज्यादा खाना मिलता था, मुझे कम मिलता था, उसको ज्यादा पैसे मिलते थे. Exactly. Now, with this comes the whole issue in neglect of emotional neglect. So, neglect दो तरह की है. एक इमोशनल निग्लेक्ट, खाना ज्यादा दे रहे हैं उसको, तो आपको तो कुछ नहीं कह रहे ना, खाना तो आपको भी दे रहे हैं, लेकिन वो जो एक फीलिंग हो रही है इग्नोर होने की, इमोशनल अनइम्पोर्टेंट होने की, ये बहुत ज्यादा डैमेजिंग होती है बच्चों के लिए, और इम्पोर्टेंट होती है कि उसको हम मोहब्बत के हवाले से, निग्लेक्ट के हवाले से, बॉन्डिंग के हवाले से आप सवालात इस तरह से कर सकते हैं. अच्छा, ये कभी इस तरह भी होता था कि फिर बिल्कुल आपको भूखा ही रखा जा रहा है घर में, आपको कपड़े भी नहीं सिला के दिए जा रहे उस तरह से, अच्छे और पुराने कपड़े दिए जा रहे हैं? ऐसी तो नहीं भूखा तो नहीं रखा गया कभी आपको, या करते थे थोड़ा सा. कभी कभी ऐसे हुआ आपके साथ? ठीक है. सो निग्लेक्ट इज अगेन इमोशनल एंड फिजिकल. अच्छा, कभी बीमार हो जाए तो ले जाते थे डॉक्टर के पास, या उसके लिए भी इग्नोर करते थे कि भाई को ले गए और आपको नहीं लेकर? बचपन में आपको पता है बच्चे स्कूल जाने के लिए करते हैं, तो पेरेंट्स यूज्ड टू से कि ड्रामा कर रहे हैं, ऐसे स्कूल भेज दिया. तो आपसे भी कहा गया कि आप ड्रामा करिए. दिस कम्स इनटू अब्यूज. ये देखिए, ये जो निग्लेक्ट है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है of adverse childhood experiences. Neglect of two kinds, emotional as well as physical. अच्छा, अब हम आएंगे उसकी तरफ, और अभी भी आप देखिएगा कि मैं जो सेक्सुअल अब्यूज का पार्ट है उसको किस सीक्वेंस में लेकर आऊं. अच्छा, वो आपने एक बीच में बात की और फिर मैंने उसके बारे में ज्यादा, क्योंकि मुझे पता है कि इतना आसान भी नहीं था. मैं ये जो अभी उस मौजू के ऊपर बात करना चाहता हूँ उसके बारे में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं, आपको पता है आपके सामने बैठा हूँ तो बाज़ औक़ात अपने आप से ये बात करते हुए किसी मर्द के साथ एक लड़की के लिए मुश्किल पेश आती है. तो अगर आप चाहें और आपको लगे कि ऐसा करना कोई आपके लिए मुश्किल हो रहा है, तो हम किसी न किसी खातून को यहाँ बुला सकते हैं. हमारे स्टाफ में नर्सेज भी हैं, लेडी डॉक्टर्स भी हैं, और हमारे पास फीमेल हमारे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज भी हैं. अगर आपको अजीब लग रहा हो इस मौजू पर बात करना जिसका आपने अभी मेरे से इजहार किया था, तो मैं उन्हें यहाँ बुला सकता हूँ ताकि आप ज़्यादा कंफर्टेड और कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, अगर ऐसा आपको ज़रूरी लगता है. डॉक्टर साहब ठीक है, मैं आपसे बात कर सकती हूँ. मेरी बात कर सकते हैं. बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस तरह से कॉन्फिडेंस और एतमाद मेरे ऊपर किया है. मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इतनी
पर्दे की बात जो है वो मेरे साथ आप शेयर कर रही हैं। अब ये इंपॉर्टेंट बात है ट्रेनिंग्स के लिए समझना कि जब आप सेक्सुअल अब्यूज प्रोव कर रहे हो तो हैव ऑफर दिस टू, नॉट नेसेसरीली आस्क इमीडिएटली, नहीं, ऑफर करें कि ये आपके लिए इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है, अगर आप कहें तो हम ऐसा कर लेते हैं, बुला लेते हैं। सो ये ऑफर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम्स के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है that you do this particular activity and show to the examiner that how sensitive you are to this issue, not only of confidentiality but giving confidence to the patient that she is talking about something really really painful, and you are showing empathy and showing compassion to your patient. तो ये बात करना, और फिर उसके बारे में जो हमने अब्यूज के हवाले से बात करनी है, उसमें फिर हम साफ ज़रे के सबसे पहले इंसल्ट्स के साथ शुरू करेंगे, खौफ के बारे में, बेइज्जती के बारे में बात करना चाहेंगे, फिर हम इंजरीज के बारे में बात करना चाहेंगे, फिर हम कोई खुदा न खास्ता किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने आपको चपेट मारी, किसी ने आपको इनअप्रोप्रिएटली टच किया, ये मैं इसमें एक चीज जरूर आपसे हिरा पूछना चाहूंगा कि आप अगर चाहें तो मुझे उस शख्स के बारे में उसकी तफसील बताएं, और अगर आप चाहें तो आप उसमें पर्दादारी भी रख सकती, अगर आप को लगे कि उसके बारे में आप पर्दा रखना चाहती। मेरे लिए ये बात बड़ी ज़रूरी है कि मैं आपसे ये ज़रूर कहूँ कि हम ख़ास तौर पर जिस पर तवज्जो देना चाहेंगे वो ये है कि क्या ये शख्स आपसे 5 साल या इससे ज़्यादा उम्र का था जब ये वाक़या आपके साथ हुआ था? जी डॉक्टर साहब, हमारा ड्राइवर था, तो अच्छा। मेरा ख्याल है 30-35 साल उम्र उस वक्त होगी। और आपकी उम्र क्या थी? 4 से 5 साल। तो ये जो बात मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ वो दैट इज टू हाईलाइट टू यू दैट समटाइम्स इन द मेमोरी patients start to talk about the frequent touching of private parts that takes place in children, between the children, which is more of an experimentation, probing. वो abuse की ज़ुमरे में नहीं आता। तो कि ये confusion आप रखिए अपने ज़हन में, रिमूव करके कि कहाँ से abuse start होती है। तो abuse में जो component है वो ये है कि inappropriate touching with sexual connotation, ये सेक्सुअल अब्यूज। तो खुदा न खास्ता फिर वो जो ड्राइवर की जो आप बात कर रही हैं कि उन्होंने ये सब सिलसिला जब शुरू किया तो वो मामला जो था वो उसको किस हद तक लेकर गए? डॉक्टर साहब, मुझे ज़्यादा तो याद नहीं है, लेकिन मुझे अक्सर ऐसे ख्यालात आते थे and I was scared to go to school alone with the driver। मुझे ऐसे थोड़े से आते थे। फिर जब मैं बड़ी हुई मैंने टीवी में वाक़यात देखे, कि जब मैं छोटी थी वो जो शख्स था वो मुझे इस तरह टच करता था या जो भी, तो that was not appropriate। वो आपको लगता था कि वो सही नहीं? जी, अब लगता है। अब लगता है। तभी भी लगता था, मैंने अपनी वालिदा से थोड़ी सी बात की थी, ठीक, लेकिन मैं क्या था कि किसी को बताना नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, you see now it is also important here to establish the degree of sexual contact that took place between the survivor and the persecutor or the perpetrator. That is very important because you're going to do some lab tests on this person subsequently, and you know that there are various types of diseases that come into play when this kind of exposure has taken place at a physical level. तो वो यहाँ करना भी बहुत appropriate होगा कि उस डिग्री को establish करना, giving all the comfort to the patient at that time when you are doing it and supporting कि वो जो degree of exposure थी वो कितनी थी, or did it lead to any kind of carnal knowledge between the perpetrator and the survivor of that act. ये वो सारी चीजें हैं जिनको प्रोब करना। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में सब नहीं जा सकते, नेचुरली वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि ये जो सारी सूरत हाल हुई इसके बारे में सब्सिक्वेंटली जब ये वाक़या गुजर गया तो इसके क्या असरात आपकी शख्सियत के ऊपर पड़े?
जैसा कि मैंने आपको बताया कि आई यूज्ड टू टेल माय फादर कि आप मुझे अगर खुद ड्रॉप करने जाएंगे तो मैं स्कूल जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। आपके और जज्बात पर, आपकी सेहत के ऊपर, आपकी परफॉर्मेंस पर स्कूल में इसके कोई असरात मुरतब हुए? मैं उस साल क्लास में फेल हो गई थी और फेल हुई थी, बहुत यानी ज़्यादा, आपकी एकेडमिक्स जो थी वो मुतासिर हुई इसके साथ। जी, एकेडमिक्स बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और So, बाहर जाने से। so what we are trying to show you here is that you do not discuss just the abuse part of it, but you also see the impact of it on the emotional health, academic health, conduct, and psychiatric consequences of this particular pathology, both just after and subsequent to that act. Now, ये मैंने आपको एक कोशिश की है कंफर्ट में लाने की कि ये सवालात किस तरह किए जाने चाहिए। अच्छा, अब जो चीज मैं थोड़ी सी और आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ वो है कि जब ये ऐसा हो जाए, वेयर टू गो फ्रॉम हियर। तो क्या आप इसी को डिस्कस करते रहेंगे या फिर इसका क्लोजर कैसे करना है और इसको अगले स्टेप पर कैसे लेकर जाना है? दिस समटाइम्स बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो वो इंटरव्यू का एक नाजुक सा हिस्सा है जो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट। सो देखिए, सबसे पहले तो ये कि मैं आपने ये जितनी भी बातें मुझसे की इस पे बहुत ज्यादा दुख का और गम का और तकलीफ का पहलू था। मैं ये समझता हूँ कि बहुत बहादुरी चाहिए एक शख्स को इन वाकयात का जिक्र शुरू करना। तो मैं आपको इस बहादुरी पर समझता हूँ कि मेरा सर झुकता है आपके सामने ये कहते हुए कि आपने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। मेरी आपसे पहली मुलाकात है आज और आपने मुझे इस काबिल भी समझा है कि मैं इसे शेयर करें, लेकिन आपने अपनी जिंदगी के ऐसे हिस्से का भी जिक्र किया है जो कि जिसको किसी के साथ शेयर करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत बहादुरी का काम। तो मैं आपसे ये भी अर्ज करना चाहता हूँ कि जब मैं ये बातें आपसे सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि किसी किसी वक्त आपका सर झुक जाता था, आप नदामत की कैफियत मुझे लगता था कि उसका आपको एहसास हो रहा है। बाज लोगों को इसमें गुनाह का एहसास भी होता है। तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ एक साइकाइट्रिस्ट की हैसियत से, एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हैसियत से, कि हम इस वाक़े को आपकी इजाज़त के बगैर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते जब तक आप हमें इसकी इजाज़त ना दें। दूसरा ये कि इसको ठीक करने के लिए हम बाकायदा आपकी इजाज़त से प्रोसेस शुरू करेंगे। इसका जो इम्पैक्ट, साज़र इस वाक़े को तो आपकी ज़िंदगी से नहीं हटाया जा सकता, लेकिन इसके जो इम्पैक्ट आपने मुझे बताया है ना आपकी ज़िंदगी पर, आपकी शख्सियत पर, उनको ज़ायल करने के लिए, उनको कम करने के लिए तरीके मौजूद है। तो वो मैं इंशाल्लाह अपने साथियों के साथ मिलके, टीम के साथ मिलके तय करके आपके साथ वो आपको पहुंचाना चाहता हूँ कि वो ज़रूर अवेलेबल हैं, इंटरवेंशन अवेलेबल हैं, जिससे कि आप, आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सारे वाक़े में वो शख्स जो ऐसा घिनौना काम करता है वो गुनाहगार है और वो जिसके साथ ये अमल किया जाए वो सर्वाइवर है। वो उस सारे वाक़े में से, उसमें से गुजरने के बावजूद अपने ज़िंदगी को कायम रखा, जद्दोजहद की, आगे बढ़े और जो जो कुछ आपने ज़िंदगी में हीरा हासिल किया वो इसके बावजूद, इतने बड़े वाक़े के बावजूद है। तो कभी अपने आप को इसमें आपने गुनाहगार नहीं महसूस करना, उसमें पार्टिसिपेंट नहीं महसूस करना, जो समटाइम्स हम करते हैं। लोग, देखा है हमने लोगों को ऐसा करते हुए कि अपने आप को इसमें मुजरिम महसूस कर रहे थे, उसका गुनाह महसूस कर रहे थे। तो ये चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता था इस वाक़े के हवाले से। और फिर इसके ऊपर बाकायदा हम एक मीटिंग करेंगे अपने साथियों के साथ मिलके, आपकी इजाज़त के साथ, आपसे पूछ के फिर उसकी इंटरवेंशंस करेंगे। तो इस वाक़े को हम, इसका एक गहरा ताल्लुक है आपकी मौजूदा ज़हनी सेहत से, जिस्मानी सेहत से, और अगर हमने इसको डील किया तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी ज़हनी सेहत पर और जिस्मानी सेहत पर आए। सो दिस इज हाउ यू रिस्पॉन्ड ड्यूरिंग दैट सेशन। छोड़ के हिस्ट्री लेके, अच्छा जी तो फिर अच्छा आपको सेक्सुअल अब्यूज हुई थी, अच्छा तो फिर आपने एमबीबीएस कब किया है, ये अगला सवाल नहीं हो सकता सेक्सुअल अब्यूज की हिस्ट्री एलिसिट करने के बाद। So just do not show this kind of insensitivity in a patient of psychotrauma. Completely leaving it, ये ऐसे ही है जैसे कि आपने लेफ्ट लेग फोसा से जाके राइट लेग फोसा में अपेंडिक्स को खोला, ठीक है, और उसको खुला ही छोड़ दिया,
अपेंडिक्स निकाला बाहर और बाकी सारा वही जोड़, भाई जो अच्छा सर्जन होता है उसको स्टिच पैक करता है. So it's very important that even if it is an exam situation, आपकी हिस्ट्री खत्म का टाइम खत्म हो गया है, लेकिन अगर आप ये अमल वहां करके डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, 99% एग्जामिनर्स would not even bother कि आपने पूरी हिस्ट्री नहीं ली है या आपने एग्जामिनेशन नहीं किया. वो आपको इस पर सपोर्ट करेंगे कि you have that sensitivity of a psychiatrist and a mental health professional within you, that you do not leave patients high and dry when you discuss sensitive matters with them. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज था जो मैं आपको देना चाहता हूँ. आखिरी बात आज की डिस्कशन की, जहां पर हम खत्म करेंगे, बहुत टाइम आपका लिया है, वो ये है कि एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की हिस्ट्री और मैनेजमेंट में क्या कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं. ये जो व्हाट नॉट टू डू पार्ट है, ये शायद मेरी इस सारी गुफ्तगू का क्रक्स है जो मैं आपसे कह रहा हूँ. नंबर 1, please never ignore it. After you have identified psychological trauma, तो ज्यादातर साइकियाट्रिस्ट जो है ना, वो कहते हैं यार मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ, अब ना इसकी कोई दवाई है, इसकी EMDR है तो यहाँ तो कोई EMDR करता ही नहीं है, इसकी CBT है तो CBT कौन करता है. तो हम इसको ना आइडेंटिफाई करने के बाद इग्नोर कर दें. So if you do not have the requisite skills, please refer this individual to a colleague who has the requisite skills. But please do not leave it unattended. Do not leave it unaddressed. It will lead to various kinds of complications and mistrust in the individual, for you as a mental health professional, but even more so on your profession. तो साइकाइट्रिस्ट्स को, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को इग्नोर करना शुरू कर देगा वो पेशेंट, सारी उम्र के लिए राइट ऑफ कर देगा अगर आपने उसको छोड़ दिया हाई एंड ड्राई. सो अब ये अगर पंडोरा बॉक्स आपने खोला है ना, तो प्लीज इसको डील भी करिएगा. आपसे नहीं हो सकता, सीक हेल्प. एंड आई वुड वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड दैट इफ यू कम अक्रॉस this issue of adverse childhood experiences in complex PTSD, in borderline personality disorders, in complex difficult cases, always involve your seniors into it, always, and have a team approach in managing psychological trauma. Do not try to deal with it just through some kind of prescription of mirtazapine or paroxetine or a beta blocker. Don't do that. Please involve a team approach towards this, in which there's a psychotherapist, there's a social worker, there are psychologists available to you, and your senior, your head of the team must know that you are dealing with somebody with psychological trauma. And after today, please, you would also know that you have dug out psychological trauma. This individual is more vulnerable for autoimmune diseases, is more vulnerable to various kinds of neuropsychiatric complications and metabolic syndromes. Investigate people with psychological trauma for these disorders. Only then it will be called a true psychological trauma. Thank you very much. Afridi साहब, मैं आपसे माफी, लेकिन I feel so passionate about this subject कि मैं उसको खत्म नहीं कर सकता टाइम में. I apologize from all of you for letting you stay on so long. Thank you very much. सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया. जिस समंदर के डोमेन की साइकोट्रॉमा की आपने बात की, टाइम कम था, लेकिन द वे कम्प्रिहेंसिव वे यू डिड दिस प्रोग्राम, और लोगों ने एंजॉय किया और पता भी नहीं चला कि 2 घंटे गुजर गए हैं. और मैं समझता हूँ अभी भी लोग सुनना चाहते हैं, और हमें कमेंट्स आ रहे हैं कि आपसे रिक्वेस्ट करें कि ये प्रोग्राम में आप वक्तन फवक्तन आते रहें, और आपकी गुनागू मसरूफियत के बावजूद हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये टीचिंग ट्रेनिंग का सिलसिला जारी रहना चाहिए. यू नो हाउ टू टीच, हाउ टू सिलेक्ट वर्ड्स एंड हाउ टू असेस पीपल पेशेंट्स. सो देयरफॉर वी वुड लाइक कि आपको हम फिर ज़हमत दें इसके लिए. बहुत शुक्रिया सर. It's been an honor and a pleasure, and I'm grateful to Mia Mukhtar al-Haq Saab for sparing so much time. I know he's such a busy individual, he's chairman of a department, and yet he has stood through these 2 hours of very difficult time. Thank you very much, Mukhtar. I'm so grateful to you as well, like all other colleagues. जी सर. मुख्तार साहब आप बताएं कमेंट्स फॉर मुख्तार को Thank you very much, sir.
Thank you very much, sir. You're being blessed कि Professor Mowadat साहब, I mean, it's always, you know, I mean, it's a matter of pleasure और आदमी बड़ा energized हो जाता है सर की lectures के साथ और I mean the way he describes each and everything, I mean it's splendid and it's beyond praise. I would request कि I understand कि it's really much press of time on you. आप काफ़ी सारे domains के ऊपर involved हैं, लेकिन अभी की जो सूरत हाल ये है सर कि अब आपने पूरी ज़िंदगी रेजिडेंट्स की टीचिंग एंड ट्रेनिंग के लिए वक़्फ़ कर चुके हैं, तो रेजिडेंट्स की तरफ से काफ़ी एक आप ग्रुप चैट में आप देख सकते हैं, इट्स विजिबल टू यू कि वो कह रहे हैं कि आप वीकली एक लेक्चर उनके लिए रखें। अच्छा, ये आपकी बड़ी मोहब्बत। असल में मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ और हमेशा अवेलेबल हूँ ट्रेनिंग्स के लिए। मेरी जान और जिगर है। मैं तो जिंदगी में एकेडमिक्स के अलावा कुछ किया नहीं, खास प्रैक्टिशनर यही किया है सारी उम्र। शायद हफ्ते में एक दफा तो खुद आप ही आप मेरी शक्ल देख के तंग आ जाएंगे, लेकिन जब भी आप को कोई ऐसा सब्जेक्ट लगे कि जो आपको लगे कि जिसमें कोई डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, कोई आप एरिया ऐसा है जो कि थोड़ा सा ऑफ बीट है, आप लोग सब बहुत जबरदस्त उस्ताद हैं माशाल्लाह। दे आर ऑल वेरी वेरी लकी टू हैव ऑल ऑफ यू। आई विल बी वेरी हैप्पी टू डेमोन्स्ट्रेट एनी स्किल पार्ट और एनी एरिया जो कि थोड़ा सा ऑफ बीट आपको लगे। आई विल बी वेरी हैप्पी टू डू दैट। मेरा ख्याल है सर कि अगर हफ्ते में इफ इट्स नॉट पॉसिबल वीकली, तो मेरा ख्याल है कि हम उसको महीने में मतलब फोर्टनाइटली रख सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, महीने में एक वेरी मच सर। जी जी बिल्कुल। अब मैं बताना चाहता हूँ कि हम अगला प्रोग्राम हमने ये प्लान किया है ना कि एक पाकिस्तान से होगा और एक पाकिस्तानी बाहर से होगा। तो हम नेक्स्ट प्रोग्राम से पहले मैं चाहता हूँ कि दुआ भी कर लें कि ये कोविड के सिलसिले में हमें अल्लाह ताला हमको, हमारे मुल्कों को और पूरी दुनिया को इस वबा से जो है निमटने की सलाहियत दे दे और हम सबको तहफ़्फ़ुज़ दे दे। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अब हमने ये सिलसिला शुरू किया कि अब कोविड ने हमें, जो हमने बताया कि कोविड ने हमें कुछ अच्छी चीजें भी दी हैं। एक तो पूरा एनवायरनमेंट ठीक हो गया, दूसरा दुनिया को पता चला कि एक मुल्क की खुशहाली और तहफ़्फ़ुज़ दूसरे मुल्क से वाबस्ता है और इलेक्ट्रॉनिकली और कम से कम मेंटल हेल्थ को लिफ्ट भी मिली। और हमने प्लान किया है कि बगैर किसी टाइम ज़ाय किए हम डिजिटली प्रेजेंट करेंगे ये सर्टिफिकेट। वो कि मुझे पता है किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि तालियां भी बजाएं और साथ में सर्टिफिकेट भी हम डिस्प्ले करें। So grateful, very good. Thank you. और इसके साथ मैं आप सबका जो खास तौर पर जो बाहर से लोग हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया और पाकिस्तान में ज्वाइन किया है, उन्हें रात का टाइम लग रहा है बरखाम में कि प्रोफेसर महबूब जो मेरे क्लास फेलो हैं, ही इज एपिडेमियोलॉजी एंड पीएचडी फ्रॉम अमेरिका। और मैं देख रहा था कि खुर्रम जो है फॉरेंसिक साइकेट्रिस्ट वो है स्कॉटलैंड से है। वो बहुत सारे लोग हैं, उन सबका बहुत शुक्रिया और इसके साथ ही सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा। उम्मीद है कि आप लोग अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखें और हम सबको तहफ़्फ़ुज़ दें। बहुत शुक्रिया। अच्छा आफरीदी, मैं आखिर में सिर्फ आपकी जो टीम है उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। They have been constantly in touch with me and I'm very grateful for the assistance that they have provided, and particularly Dr. Hira for being such a good participant in the interaction that we've had. I'm so grateful to all of you. डॉक्टर सूरो जो है, फातिमा सूरो ने बड़ी इसमें जो डिजाइन करने में और फ्लायर बनाने में, और इसके साथ साथ में एको के में जो बैठे हैं हमारे सारे टीम जो है, उज़ैर साहब खास तौर पर इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने 1000 की कैपेसिटी वाली जो है हमें ये दी है और ये टीचिंग ट्रेनिंग में बड़ा हेल्प करते हैं। पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी की तरफ से मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये हमारा तीसरा प्रोग्राम था, बहुत ही सक्सेसफुल था और लोग इसको बहुत लेवल पे सुनेंगे। बहुत शुक्रिया। रसूल साहब, he is around as well, sir. Thank you, sir. बहुत शुक्रिया फ्रीजी साहब। कैन आई कॉल ऑफ द मीटिंग प्लीज? Yes, record and download. जी हाँ, रिकॉर्ड हुई है, हम इसको डालेंगे इंशाल्लाह उस पर वेबसाइट। Record and download. जी क्या? ये
ये मीटिंग को रिकॉर्ड भी कीजिएगा और डाउनलोड भी कर लीजिएगा. Okay, fine. ठीक. Okay. Allah Hafiz. Thank you very much.